Okay, just a minute. Let me share the page. Okay. So we were reading about card stacking propaganda technique. When people say that the cards were stacked against me, they mean that they were never given a fair chance. Applied to propaganda, card stacking means that one side may suppress or distort evidence, tell half truth, oversimplify the facts. Let me highlight it. Or set up a straw man or a false target to divert attention from the issue at hand. A very good example of card stacking recently, if you are aware, was between Ramadev from Patanjali Ayurveda in India and the Indian Medical Association. Are you aware about what happened? No, sir. Okay, No, sir. let me just briefly show you on internet what happened. I'll show you a very good example of card stacking. Just a minute. Uh, Here is a small notice. Sorry, video, you watch it. I think somebody has explained this. Wait, let me share the page. It's in Hindi, sorry for that. So please listen to it. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा 1,000 करोड़ का एक नोटिस दिया गया है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, क्रिमिनल एक्ट रामदेव गेट्स 1,000 करोड़ डिफेमेशन नोटिस फ्रॉम आईएमए उत्तराखंड। तो एग्जैक्टली ये चल क्या रहा है, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है बाबा रामदेव के स्टेटमेंट को लेकर, ये एग्जैक्टली हुआ क्या है। और फिर उसके बाद बाबा रामदेव ने भी कुछ 25 क्वेश्चन जो है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से पूछे थे। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए 1,000 करोड़ रुपए का नोटिस यहाँ पर आईएमए की तरफ से दिया गया है। तो एग्जैक्टली इसका अर्थ क्या है, सबके बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सर्व किया है एक डिफेमेशन नोटिस ऑन रामदेव, क्योंकि उनके द्वारा इल्जाम लगाया गया है कि बाबा रामदेव की तरफ से कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए गए थे एलोपैथी को लेकर, जो मॉडर्न साइंस मेडिसिन है उनको लेकर यहाँ पर कुछ रिमार्क्स दिए गए थे जो कि पूरी तरह से खिलाफ जाता है। जो डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ कुछ ऐसे वक्तव्य बोले गए थे बाबा रामदेव के द्वारा जो कि उनको पसंद नहीं आया, और इसी की वजह से यहाँ पर ये डिफेमेशन केस डाला जा रहा है। बेसिकली आईएमए का यहाँ पर ये कहना है कि आप 15 दिन के अंदर, मतलब 15 डेज के अंदर अपॉलॉजी, रिटन अपॉलॉजी आप लिख कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो हम आपके ऊपर 1,000 करोड़ रुपए का जो कंपनसेशन है वो डिमांड करेंगे। ये जो नोटिस है मैं आपको बता दूं,
कि नीरज पांडे एक लॉयर है, उनके द्वारा दिया गया है। उन्होंने बेसिकली आईएमए उत्तराखंड के सेक्रेटरी हैं अजय खन्ना, उनके बिहाफ में ये वाला 1,000 करोड़ रुपए का नोटिस दिया गया है। और उनके द्वारा बताया गया है इस लेटर के अंदर कि जो 2,000 प्रैक्टिशनर्स हैं आईएमए के अंदर, ये जो मेंबर्स हैं 2,000 मेंबर्स, उनके इमेज को एक तरह से नुकसान पहुंचाया है बाबा रामदेव ने, इसी की वजह से हम यहाँ पर उनको नोटिस भेज रहे हैं। और आप देख भी पाओगे नीरज पांडे एडवोकेट, उनके द्वारा ये पूरी चिट्ठी लिखी गई और यहाँ पर सर्व किया गया है बाबा रामदेव को। लेकिन सबसे पहला तो ये क्वेश्चन आता है, ये 1,000 करोड़ कैसे हो गया? मतलब कुछ आंकड़ा होगा ना, 50 करोड़ 100 करोड़, मतलब ये 1,000 करोड़ आ कहां से गया? तो देखिए यहाँ पर जो नीरज पांडे, उनका ये कहना है कि ये जो रिमार्क्स दिए गए थे बाबा रामदेव के द्वारा, वो क्रिमिनल एक्ट आता है अंडर सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो ये क्रिमिनल एक्ट के अंदर आता है और हम चाहते हैं कि वो अपॉलॉजी दें। अगर वो अपॉलॉजी नहीं देते हैं तो यहाँ पर हर एक मेंबर को 50 लाख रुपए पे करना होगा। मतलब हर एक मेंबर को 50 लाख रुपए, और टोटल मैंने आपको बताया 2,000 प्रैक्टिशनर्स हैं, मेंबर्स हैं, इसका मतलब ये जो अमाउंट है वो 1,000 करोड़ रुपए हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर यह भी बोला गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा कि आपको एक वीडियो क्लिप बनाना पड़ेगा और उस वीडियो क्लिप के अंदर बोलना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी और अपने जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उसको वापस लेना पड़ेगा। और वो जो वीडियो क्लिप है आपको सभी सोशल मीडिया। Baba Ramdev said that allopathy cannot cure coronavirus infection, and he said that many doctors and others who had taken vaccine, they also died. And at this statement, the Indian Medical Association was very, very angry with Baba Ramdev. And quite for some time, there was a huge debate. Huge development in the Twitter toolkit, Rao. Now we've got the Delhi police landing up in an unprecedented development at the office of Twitter India. India Today is the only channel on ground zero. My colleague and our crime correspondent Arvind Ojha is at the office looking at what the Delhi police is doing, also for the big picture on Twitter, not appointing regulators, and that's something that the government's furious about. We've got Rahul Srivastava, our national affairs editor, joining us as well. But first and foremost, to Arvind Ojha. Arvind, what are your sources in the Delhi police telling you about why they're present at this moment at the Twitter India office? What are they hoping to find? जी बिल्कुल, देखिए ये बिग डेवलपमेंट है राहुल, और इंडिया टुडे की टीम सिर्फ यहाँ पर पहुंची हुई है। ये स्पेशल सेल के ऑफिशियल है और ये ट्विटर का लाडो सराय का ऑफिस है, जिसके अंदर जाने की कोशिश स्पेशल सेल के ऑफिशियल कर रहे हैं। इनका कहना है कि टूल किट मामले में जांच करनी है। इसके अलावा गुरुग्राम में भी जो ट्विटर इंडिया का ऑफिस है वहां पर भी स्पेशल सेल की टीम पहुंची हुई है, इंस्पेक्टर है। सर अभी आप अंदर जा पाए? नहीं, मेरे डीसीपी साहब आपको ब्रीफ करेंगे। क्या अभी अंदर जा पाए इंक्वायरी? नहीं, अभी वो ट्विटर का कोई है नहीं यहाँ पर। वी आर ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट। ओके, किसी ट्विटर के अधिकारी से बात हो पाई है इस मामले में? अभी टूल किट मामले में Let's come to our text. So, card stacking is a controversy between two sides, two business products, or two people, or two political parties, in which one party tries to distort the evidence of the truth, or tells only half truth, or hides the facts or data, and tries to blame a false person or false target. Why? To divert attention. Card stacking is a difficult form of propaganda, both to detect and to combat. When a candidate claims that an opponent has changed his mind 5 times on this important issue, we tend to accept the claim without investigating whether the candidate had good reasons for changing his mind. Look here, what happens here in card stacking, you blame the person, not the issue. Once again, in card stacking,
You try to insult the person rather than trying to argue with what they have said. We, like you saw in the earlier example, they were trying to insult Ramdev rather than arguing with what he said about allopathy. We tend to accept the claim without investigating whether the candidate has good reasons for changing his mind. Many people are simply swayed by the distorted claim that the candidate is waffling on the issue. Now, look, when people listen that Baba Ramdev is going to pay 1,000 crore rupees, then people will not think about the issue, but they will conclude that Baba Ramdev must have done something bad. Advertisers often stack the cards in favor of the products they are advertising. So you can stack the cards in favor of the product. You can also stack the cards against the product. Advertisers often stack the cards in favor of the products they are pushing. They may, for instance, use what are called weasel words. What are weasel words? Let's try to understand. This may come in exam as well. Okay, what are weasel words? Small words that usually slip right past your ear and you don't notice, but that makes the difference between reality and illusion. For example, suppose in an advertisement of shampoo, you hear this expression, helps control dandruff symptoms. Let me show you. I think I can find an example of this thing. Okay, here is one. Let's check what they're saying. The best chef award goes to सोनाक्षी एक सेल्फी प्लीज। तुम्हारे डैंड्रफ के साथ? अरे सब ट्राई किया पर जाता ही नहीं। चिक महानीम ट्राई किया, डैंड्रफ का सबसे बड़ा दुश्मन। नीम? साधारण नीम नहीं, हिमालय जैसे पहाड़ों में मिलने वाली महानीम। चिक एंटी डैंड्रफ शैम्पू में है महानीम। Look the visual word, Mahaneem. Oh God, what do you understand by Mahaneem? पहाड़ों पर उगने वाली महानीम, साधारण नीम नहीं. नीम is नीम. Look from beginning. the best chef award goes to सोनाक्षी एक सेल्फी प्लीज। तुम्हारे डैंड्रफ के साथ? अरे सब ट्राई किया पर जाता ही नहीं। चिक महानीम ट्राई किया, डैंड्रफ का सबसे बड़ा दुश्मन। नीम? साधारण नीम नहीं, हिमालय जैसे पहाड़ों में मिलने वाली महानीम। चिक एंटी डैंड्रफ शैम्पू में है महानीम। ये जिद्दी डैंड्रफ पे भी जबरदस्त अटैक करे और इसका फेनुग्रिक प्रोटीन फॉर्मूला हेयर फॉल कंट्रोल करे। Okay, hair fall control करे. Look, his sentence, hair fall control करे. Now the word is control, and people will understand that it removes all dandruff. Okay, go on. जाएगा नहीं, भागेगा। चिक एंटी डैंड्रफ शैम्पू, डैंड्रफ का सबसे बड़ा दुश्मन। Let's watch one more example of. Okay, is this longer or? सही चॉइस। कैसे कहें क्या है सही चॉइस जब हर चॉइस में है कॉम्प्रोमाइज। डैंड्रफ हटाता है पर सॉफ्टनेस का क्या? स्ट्रॉन्ग है पर डैंड्रफ का क्या? सॉफ्ट है नाइस पर स्ट्रॉन्ग हेयर का क्या?
सही चॉइस तो वही है जिसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसलिए मैं यूज और स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ स्कैल्प ग्रो, जिसमें है क्लिंबाजोल जो डैंड्रफ मिटाए, पिरोक्टोन ओलामाइड जो बालों को स्ट्रॉन्ग बनाए, और कंडीशनिंग बेस जो रखे उन्हें सॉफ्ट। स्कैल्प ग्रो, चॉइस सही जब कॉम्प्रोमाइज नहीं। Okay, I'm a text mount electricity. Helps control dandruff symptoms. The audience usually interprets this as it stops. So in the advertisement, they use the word help, right? But people understand this as stop. Most dentists surveyed recommend sugarless gum for their patients who chew gum. Now, in this sentence, the audience might not pay attention to the word survey and they will listen only most dentists recommend, right? In the same way, sticker price $1,000 lower than most comparable cars. So when you say most comparable car, people will ignore the word comparable and they will listen only most cars. Advertisers also use a card stacking trick when they make an unfinished claim. For example, they will say that their product has twice as much pain reliever. So twice as much to what? Twice, two times more than what? That is not given. Incomplete sentences. We are left with a favorable impression. द्विगुना राम्रो छ हमारा औषधि तर द्विगुना के भन्दा we don't usually ask twice as much pain reliever as what? Or advertisers may make extremely vague claims that sound alluring but have no substance, like Toyota's, oh, what a feeling. Now, what do you mean by what a feeling? Right? It's very vague. Vintage cigarettes claim the taste of success. How can cigarette be the taste of success? What is the taste of success and what is the taste of failure? The spirit of Marlboro, Coke's the real thing. Another way to stack the cards in favor of a certain product is to use scientific sounding claims that are not supported by sound research. When Ford claimed that its LTD model was 400% quieter, many people assumed that the LTD must be quieter than all other cars. When taken to court, however, Ford admitted that the phrase referred to the difference between the noise level inside and outside the car. Look, first they said that the car was 400 times quieter, and people thought that this was the quietest car in comparison to all cars. But when somebody filed a case in the court that they're misleading, then they said that yes, we said the car is 400 times quieter inside than the outside itself. Other scientific sounding claims use mysterious ingredients that are never explained as selling points. Special whitening agent may be in a toothpaste. The ingredient doctors recommend. Okay, they never tell you what ingredients. महानिम भने नि के हो त्यो महानिम भनेको राइट मिस्टिरियस एकचोटि एक्जाम्पल हेरौँ है त कार्ड स्ट्याकिङको हेरौँ है ओके एउटा छ यहाँ सुरुबाट हेरौँ न
Beatrice, every girl's best friend. Okay, अझै एउटा हेरौँ है त Okay, When it comes to getting my family to eat breakfast, I could use all the help I can get. Like Nutella, a delicious hazelnut spread that's perfect on multigrain toast, even whole wheat waffles, for a breakfast that my kids love and I feel good about serving. And Nutella is made with simple, quality ingredients like hazelnuts, skim milk, and a hint of cocoa. It's quick, easy, and something everyone can agree on. Nutella. Breakfast never tasted this good. okay. When it comes to getting my family to eat breakfast, I could use all the help I can. Next, last one, bandwagon. In the bandwagon technique, advertisers pressure. Everyone is doing it. Why don't you? This kind of propaganda often succeeds because many people have a deep desire not to be different. Political aides tell us to vote for the winning candidate. Advertisers know we tend to feel comfortable doing what others do. We want to be on the winning team. Or advertisers show a series of people proclaiming, I'm voting for the senator. I don't know why anyone would not. Again, the audience feels under pressure to conform with the majority. In the marketplace, the bandwagon approach attracts buyers. Advertisers tell us that nobody does not like Sara Lee. ये भी क्या बंदे हैं चलो Nobody does not like Sara Lee. Everybody doesn't like something, but nobody doesn't like Sarah Lee. Everybody does not like something, but nobody does not like Sara Lee. Everybody doesn't like something, but nobody doesn't like Sarah Lee. Everybody doesn't like something, but nobody doesn't like Sarah Lee. Everybody doesn't like something, but nobody doesn't like Sarah Lee. Everybody doesn't like something, but nobody doesn't like Sarah Lee. Everybody doesn't like something, but nobody doesn't like Sarah Lee. Everybody does not like something, but nobody does not like Sara Lee. They are telling that most of the people eat Sara Lee, so you should also eat Sara Lee. The message is that it must be weird if you don't like Sara Lee. They tell us that most people prefer brand X 2 to 1 over other leading brands to be like majority, we should buy brand X. If we don't drink Pepsi, we are left out of the Pepsi generation. Look, to take part in America's favorite health kick, the National Daily Council urges us to drink milk.
and Honda motorcycle advertisers praising the virtues of being a follower tell us follow the leader. He is on Honda. Mayup bigyan देखा दिन चलो. Follow the leader. He is on a Honda. I think here we come. Hi, I'm your Honda dealer. And today I'm showing you the 1972 Honda. It's so reliable. It gets good gas mileage, goes up to 80 miles per hour, etc. And it's fun, just plain old fun. So remember, Follow the leader, he says. Remember, follow the leader, he said. Okay, you see there. Follow the leader. You are on a Honda. Okay. Okay. So we read about the 8 types of propaganda techniques from name calling to bandwagon. Now, why do these propaganda techniques work? So in this essay, there were 3 sections. First, we defined propaganda technique. Then we read about the types of techniques. Now we are reading how do these propaganda techniques work? What do these propaganda techniques work? Why do so many of us buy the products, viewpoints, and candidates urged on us by propaganda messages? They work because they appeal to our emotions, not to our mind. Look, let me give an example of an advertisement that completely appeals our emotion, not mind. Here is one. Okay, watch it. They are advertising Calvin Klein jeans and looks like they're advertising about sex. Look, so the argument was advertisements work because they are based on emotions, right? Not on your mind, but on your heart. They appeal to our emotions, not our mind. And you will see that 99% of the advertisements, they are based on sexual emotions, whether it is Amol Macho or Calvin Klein. Often, in fact, they capitalize on our prejudices and biases. For example,
if we are convinced that environmentalists are radicals who want to destroy America's record. Okay, one example I'll show you about this, how advertisements are based on prejudices and biases. A very good example. Let me show you. One prejudice we have, one bias we all have, is about the color of the people's body, right? We have this bias. We falsely think that those people who have a very fair skin, they are beautiful and handsome, right? Here is an example. समझ गए? ये मेरा हाथ है और ये तुम्हारा। ओह, हम दोनों में कोई मेल दिखता है? काला किसको बोल रही है रे? अगर आप भी इन मैडम की तरह गोरे और काले के बीच में फर्क करते हैं तो आप एक रेसिस्ट हैं। तो Once again, see from beginning. Sir, ये मेरा हाथ है और ये तुम्हारा। ओह, हम दोनों में कोई मेल दिखता है? काला किसको? हम दोनों में कोई मेल दिखता है? Are we alike? Look, So we all couldn't see the human beings video. are alike. But she says we are not alike because your hands are black or brown, mine are fair. समझ गए? ये मेरा हाथ है और ये तुम्हारा। ओह, हम दोनों में कोई मेल दिखता है? काला किसको बोल रही है रे? अगर Hey, Savala kisko bol rahi ho re? South Indian movie. Now all the people who have Savala complexion, they will feel very bad. अगर आप भी इन मैडम की तरह गोरे और काले के बीच में फर्क करते हैं तो आप एक रेसिस्ट हैं। अब गोरे रंग से हम लोगों को इतना ऑब्सेशन है कि एड्स बनाने वालों ने इसका बहुत सही फायदा उठाया। स्टाइल मारा पर गंदा बना, पोज मारा पर गंदा बना, कंधा बना कंधा बना कंधा बना कंधा बना। सिर्फ पोज मारोगे तो कंधा बनकर रह जाओगे। हैंडसम बन, बंदा बन। Ah, fair and handsome. Look, सिर्फ कंधा नहीं बंदा बन, सिर्फ कंधा नहीं बंदा बन। तो मतलब अगर आप काले हैं तो आप इंसान ही नहीं हो। तो oh, banda ban, be a human being. If you don't have fair skin, you are not a human being. Oh God, यहाँ बंदा खत्म करे के हुन्छ? जब तक वो लड़का काला था तब तक उसको कोई भाव ही नहीं दे रही थी, लेकिन now he is fair and handsome. Now he has got girls, not one, two girls. अब क्रीम लगायो भने केटी पट्टे हुने लाइक हेर त हाम्रो क्लासको भाइ बहिनीहरूले क्रीम किन्ला नै फेरि। So we couldn't see the video. हाँ? So video देखेकै छैन। देखा छैन? छैन सर। यति बेर किन चुप्प लाएर बस्या त? अघि देखिरहेको दुई तीनचोटि भनिसकेँ सर। सुनिरहेको थिएँ सर, अघि नै सुन्नु भएन तपाईँले। भगवान प्रभु तिम्रो त अद्वितीय छौ, अद्वितीय युनिक छौ, युनिक। हजुर सर अगाडि हेर अब। बोलाउनु भयो। सर हजुरले नसुन्नु भएको थियो, हामीले भने हो। म प्ले गर्दिएँ ल। समझ गए? ये मेरा हाथ है और ये तुम्हारा। ओह, हम दोनों में कोई मेल दिखता है? काला किसको बोल रही है रे? अगर आप भी इन मैडम की तरह गोरे और काले के बीच में फर्क करते हैं तो आप एक रेसिस्ट हैं। अब गोरे रंग से हम लोगों को इतना ऑब्सेशन है कि एड्स बनाने वालों ने इसका बहुत सही फायदा उठाया। स्टाइल मारा एडवर्टाइजमेंट ऑफ फेयर एंड हैंडसम। पोज मारा पर कंधा बना, कंधा बना कंधा बना कंधा बना कंधा बना। सिर्फ पोज मारोगे तो कंधा बनकर रह जाओगे। हैंडसम बन, बंदा बन। Handsome bun, banda bun. Be fair, be human being. What does it mean? If you are not fair, you are not human being. नया फेयर एंड हैंडसम
सिर्फ कंधा नहीं, बंदा बनो। सिर्फ पंगा के समथिंग नहीं, बंदा बनो, बी ह्यूमन बीइंग। सिर्फ कंधा नहीं, बंदा बन। तो मतलब अगर आप कंधा नहीं बंदा बन। इफ तपाईको छाला कालो छ भने यु विल बी कंधा। फेयर एन्ड ह्यान्डसम लगाएपछि छाला गोरो भयो भने विल बी बंदा। इफ योर स्किन इज नॉट गोरो यू आर नॉट ह्यूमन बीइंग। काले हैं तो आप इंसान ही नहीं हो। जब तक वो लड़का काला था तब तक उसको कोई भाव ही नहीं दे रही थी, लेकिन नाउ ही इज फेयर एंड हैंडसम। नाउ ही हैज गॉट गर्ल्स, नॉट वन टू गर्ल्स। और अब हम देख रहे हैं एक चाइनीज डिटर्जेंट की एड, जिसमें एक चाइनीज लड़की जो है वो कपड़े धो रही है और ये एक ब्लैक मैन जो है वो आया उसके पास चल के। अबे ये क्या कर दिया, बंदे को वॉशिंग मशीन में डाल दिया, अब उसके ऊपर बैठ भी गई। अरे मर जाएगा बेचारा, बाहर निकाल उसको। अरे हेलो मैडम। अबे ये क्या हुआ? डिटर्जेन्ट सोपको विज्ञापन यहाँ मतलब रेसिस्ट के हुन्छ? चीजों को बेहतर बनाए चाइनीज डिटर्जेंट। क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? ओके, तो इस एड के लॉजिक के हिसाब से एक काला आदमी एक ब्लैक मैन डिटर्जेंट से धुलने के बाद बेहतर बन गया, सुंदर बन गया और थोड़ा सा मीठा भी शायद। अब ये ऐड देख लो, एक बाप अपनी बेटी को फोर्स कर रहा है कि तू शादी कर ले क्योंकि तू काली है। लड़का अच्छा है, पहले मैं जॉब करना चाहती हूँ। पर उसके पास है ना अच्छा जॉब, ओन हाउस, वेल सेटल्ड है। पर डैड परफेक्ट मैच है बेटा, ऐसा रिश्ता रोज नहीं आता। मे बी डैड सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। क्या? और अब पता क्या होगा, लड़की फेयर एंड लवली लगा के गोरी हो जाएगी। गोरी क्या हो जाएगी, ऐसा लगेगा मुंह पे ट्यूबलाइट जल गई है अचानक से। हेलो हेलो भाई, मजा ना आ रहा है यार, ये ट्यूबलाइट थोड़ी और ब्राइट करो। ये इतने गोरेपन से काम नहीं चलेगा, और गोरा और गोरा। सर ये ठीक है? नहीं 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 नहीं, ब्राइटनेस थोड़ी और बढ़ाओ, और गोरा और गोरा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और बढ़ाते जाओ जब तक ना बोल रहा हूँ। हाँ बस बस बस, अभी बिल्कुल सही है। शाइला क्या मस्त गोरी करी है यार, अभी तो एकदम सारे कन्विंस हो ही जाएंगे कि फेयरनेस क्रीम क्या गोरी करती है यार, मस्त एकदम बढ़िया यार। और एक काम करना, इसका ये बिफोर वाले को 2 टोन और काला करो। हाँ करते जाओ, पूरी अमावस लगनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ बेटा एकदम काली से गोरी हुई है। बस बढ़िया, अभी दोनों साथ में दिखा। हाँ अब देख, अब लग रहा है ना कि हाँ हुई है ये काली से गोरी, अब फेयरनेस क्रीम बिकेगी हमारी। ब्रिलियंट, तुम मेन डांसर और तुम साइड से पढ़ना। अब फेयर एंड लवली की हर एड की तरह ये एक नाकाम, अनसक्सेसफुल, इग्नोर्ड लड़की है। क्यों? क्योंकि ये काली है। लेकिन इसके बाद इसकी दोस्त इसको एक फेयरनेस क्रीम देगी, फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम, जिसको लगा के बस 4 या 5 दिन में ये इतनी गोरी हो जाएगी, इतनी गोरी हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ इतनी गोरी हो जाएगी कि बस लगेगा तुम्हें अचानक से मुंह पे ट्यूबलाइट जल गई हो। और उसके बाद सक्सेस, उसके बाद सारी दुनिया की नजर बस इसी पर। उजला रूप है तेरा, चांद भी शर्मा जाए। Thank you. So what were we saying? Advertisements work because we have some prejudices and biases, like our false belief that तपाईको छाला चाहिँ ब्राउन छ भने तपाई नराम्रो मान्छे हो, तपाईको छाला गोरो छ भने तपाई चाहिँ एकदमै राम्रो मान्छे हो, right? And based on the prejudice we have advertisements like that of Fair and Lovely or detergent, जहाँ चाहिँ अफ्रिकन केटालाई वाशिङ मेसिनमा हाल्यो भने चाइनिज बन्दो रहेछ, right? For example, if we are convinced that environmentalists are radicals who want to destroy America's record of industrial growth and progress, then we will applaud the candidate who refers to them as tree huggers. Clear thinking requires hard work. Analyzing a claim, researching the fact, examining both sides of an issue, using logic to see the flaws in an argument. Okay, why do advertisements work? Because people do not have clear thinking.
त्यो एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु ल कसरी चाहिँ मान्छेको क्लियर थिङ्किङ हुँदैन भनेर हेर्ने है एकदमै फनी एक्जाम्पल छ ओके मान्छेको क्लियर थिङ्किङ कसरी हुँदैन हेर्ने है एकचोटि सेयर गर्छु ल कोई चक्कर नहीं कहाँ बात करें हो रही सुरुबाट हेर ल कोई चक्कर नहीं कहाँ बात करें हो रही ओ डियर दुनिया लगाती उल्टी गियर इनको कुछ तो दिखाना होगा कुछ तो इनको सिखाना होगा हो जाए जिससे सब क्लियर गाड़ी नंबर 5277 गाड़ी नंबर 5577 तुरंत गाड़ी सर आपकी गाड़ी आ रही है थैंक यू हे नाइस टॉक अब त्यो पछाडि ल्याएर राखेको कारलाई पार्किङ लटबाट हटाएर क्लियर गर्नलाई उसले त्यो पार्किङ लटको मान्छेलाई गाडी नम्बर यतिलाई बाहिर निकाल्न अनाउन्स गर्दै भन्यो त्यो कसैले भन्दैमा त उसले अनाउन्स गरिदिन्छ तर यहाँ के देखायो भन्यो अनाउन्स गरिदियो त्यो बुद्धि कहाँबाट आएको रे स्प्राइट खाएर क्लियर थिङ्किङ भएको रे के बट द्याट्स द वर्स्ट थिङ्किङ के अब अगाडि हेर्नुहोस् अर्को विज्ञापन ए स्प्राइट के यहाँ हेर्नुहोस् अझ यहाँ भन्दा पनि यो हो कि मर गया तू आ रहा हो तू स्प्राइट भी इधर है तेरी बाइक लेके चंपल हो जाएगा वो मुझसे नहीं मांगेगा क्यों तू फन्ने का है मेरे से तो रोज बाइक मांगते रहता है वो पर मुझसे कहेगा दोस्ती के बीच ना बाइक नहीं आनी चाहिए अच्छा प्लीज यार तेरी बाइक दे दे तेरा मेरा क्या होता अपनी है दोनों की थैंक यू यार दोनों इसे साथ में दोनों साथ में पेट्रोल भरेंगे साथ में और ईएमआई भी साथ में भर देंगे ब्रदर हम दोनों के बीच में कभी भी ये बाइक नहीं आनी चाहिए आई लव यू ब्रदर स्प्राइट क्लियर है अब बाइक माग्न गएको साथीलाई ल बाइक तेरो मेरो भएपछि इएमआई पनि तेरो मेरो सर्भिसिङ पनि चार्ज पनि तेरो मेरो धुनी पनि तैँले मैले भनेपछि उसले बाइक मागेन अरे इज द्याट सो practically possible in real life के so हामीले एक्चुअली टेक्स्टमा हो है आज घाँटी मेरो बिग्रिरहेको छ advertisements work because consumers do not have clear thinking they do not analyze the claim त्यो अघि फेयर एन्ड लभलीमा अथवा डिटर्जेन्टमा त्यो कालोलाई गोरो बनाउँछ भन्नेलाई we do not analyze the claim we believe it we do not research the fact we do not examine both sides of an issue we do not use logic to see the flaws in an argument that's why advertisements work because propaganda is so effective it is important to detect it and understand how it is used. We may conclude after close examination that some propaganda sends a truthful, worthwhile message. ल तिमीलाई म सोध्छु ल कुनै यस्तो विज्ञापन सम्झ कुनै यस्तो एडभर्टाइजमेन्ट रिमाइन्ड गर मलाई सम्झाऊ जसमा चाहिँ कुनै अलिकति नराम्रो प्रडक्टको एडभर्टाइज गर्नको लागि कुनै पोजिटिभ काम गरेको देखाउँछ उसले मैले अस्ति देखाएको थिएँ कुनै क्लासमा बिर्सेँ के रिमेम्बर
a product in the advertisement of which you see characters doing something very good, whereas the product is not so good. कसले याद आउँछ कुनै? Sir, Happydent chewing gum. ह्याप्पीडेन्ट हेर ओ ल ल ह्याप्पीडेन्ट हेरौँ है त ओके सर अँ खुकुरी चुरोट वाला एड ए पखै र अहिले मैले सम्झेँ कि गुडविल फाइनेन्सको विज्ञापन आउँथ्यो पहिला नेपाल टेलिभिजनमा गुडविल फाइनेन्सको विज्ञापन आउँथ्यो अनि त्यसमा चाहिँ त्यो सुपर मार्केटमा चाहिँ मान्छेले सामान किन्न लागेको बेलामा एकजना मान्छे हेल्प गरेर देखाउँथ्यो कि अनि त्यो विज्ञापनमा उहाँलाई त अरूलाई हेल्प गर्ने बानी नै परेको छ किनभने उहाँ चाहिँ गुडविल फाइनेन्समा काम गर्नुहुन्छ भन्थ्यो कि अनि अहिले यहाँ गुडविल फाइनेन्स चाहिँ करोडौँ रुपियाँ ठगेर लापता भएछ कि ह्याप्पीडेन्ट गरौँ है त एकफेरि ये हेरौँ है त ल म पहिला सेयर गर्छु ल यसै गइसकेको रहेछ देखिन्छ होइन लेडीज सीटिंग होइन सर सर लिखा भी है इधर हमें तो नहीं दिख रहा है Sir, we can't see. हमें तो नहीं दिख रहा है we can't see. लातों के भूत जब काबू ना आए थोड़ी सी चल देखे ना Sir, सर हमें भी नहीं दिख रहा है हैप्पीडेंट वाइट दिखा मलाई फेरि हेर्न मन लाग्यो ल सुरु गर राम्रो लाग्यो we can't see. देखेकै छैन देखेन अँ, ए हामीले देखेको भगवान् सर। के हुन्छ ल म देखाउँछु ल यो चाहिँ राम्रो रहेछ राम्रो लाग्यो कसले सजेस्ट गरेको यो कसले भनेको रे राम्रो रहेछ यो ल हेरौँ है हाम्रो बहिनीहरूलाई साह्रै मन पर्ला ल एक्सक्यूज मी लेडीज सीटिंग लिखा भी है इधर हमें तो नहीं दिख रहा है लातों के भूत जब काबू ना आए थोड़ी सी लाइट मारो सच्ची सी दिखा पत्ती सी कर बात अच्छी सी लातों के भूत जब काबू न आए तो के भन्यो लातो मलाई यसको लाइनिङ मन पर्यो कि पकाइ यसको जुन लाइन छ नि हेर है लिखा भी है इधर हमें तो नहीं दिख रहा है लातों के भूत जब काबू ना आए थोड़ी सी लाइट मारो सच्ची सी लातों के भूत जब काबू में न आए तो लाइट मारो सच्ची सी दिखा बत्ती सी कर बात अच्छी सी हैप्पीडेंट वाइट दिखा बत्ती सी कर बात अच्छी सी अझ एउटा हेरौँ है त मलाई यो चाहिँ राम्रो लाग्यो कि ह्याप्पीडेन्टको यो पनि हेरौँ त ल एकछिन यसमा के रहेछ ल
ओके, और पाठमा आउँदा अब के पढ्दा त हामीले के कुरामा यो निकाल्यौँ हामीले या सम प्रोपेगेन्डा सेन्ड्स अ ट्रुथफुल वर्थ वाइल मेसेज। अब ह्याबिडेन्ट खाएर दाँत चम्किलो त हुँदैन, त्यो त स्विङ्गम हो, टुथपेस्ट पनि होइन, बट इट सेन्ड्स अ गुड मेसेज। त्यो केटीको सिटवाला देख्यो नि, लेडी सिटवाला। सम एडभर्टाइजिङ फर इन्स्टेन्स अर्जेस अस नट टु ड्राइभ ड्रङ्क टु बिकम खुकुरीको भने कसले अघि त्यसो छ खुकुरीको अहिले मैले कसले भनेको थिएँ खुकुरी रमको छ भनेर चुरोटको भनेको थियो मैले। खुकुरी चुरोटको हेरौँ है त। रहेछ कि राम्रो मेसेज दिने कुनै ल एउटा यहाँ छ, ल हेरौँ है त के रहेछ हेरौँ। सुरुबाट हेरौँ त। पहाडको उचाइ, दैनिक संघर्ष अनि सहन शक्तिको कडा परीक्षा। म सम्झिन्छु यो नेपाल टिभीमा देखाएको विज्ञापन। खुकुरी फिल्ड छ। संसारलाई केही गरेर देखाउने चाहना, मेरो सपना। हरेक क्षणको अटुट प्रयासले पुर्याउँदै लग्यो मलाई परीक्षाको त्यो अन्तिम घडीसम्म। यो सूर्य नेपाल गरौँ है त। Nepal fascinates me. While studying in Europe, I saw the Alps, but nothing to beat my Nepal, my pride. I remember the day Father and I visited the palace at Novakot. I went there again. The drive was still as enjoyable. माई नेपाल माई प्राइड भन्छ, तर विज्ञापन के हुन्छ चुरोटको छ। And the palace, breathtaking. Suddenly I heard a flute. अर्को एउटा वाइवाईको कसरी नराम्रो चिजले राम्रो कुरा गरिरहेको छ हेर्नुहोस् है, यसमा नि छ। अलग अलग हमनी के एक को चुनाई, एकता के स्वाद जगावे हमनी के मन में वाई वाई। एकता के स्वाद जगावे हमनी के मन में वाई वाई। Why creates a feeling of unity in our heart. Look, this is a very junk, it is a junk food.
But यसले राम्रो गरेर के गरिरहेछ, the idea of unity in the country. ओके, हाम्रो पाठमा हो है त अब। एकता के स्वाद जगै छी हमनी के मन में वाई वाई, मैथिलीमा। They urge us to not to drive us drunk or become volunteers to contribute to charity, and so we must be aware that propaganda is being used. Otherwise, we have consented to handing over to others our independent thought and action. Propaganda works because people do not have independent thinking. जाँचमा एउटा लङ आन्सर लाउने क्वेसन एकदम राम्रो छ यहाँनिर हेर्ने। यो क्वेसन एक्जाममा एकदमै आउन सक्छ, यो एकदमै बढी आउने क्वेसन छ यहाँ, याद गर्ने ल। के क्वेसन भने मैले, वाइ डु प्रोपेगेन्डा टेक्निक्स वर्क, राइट इन डिटेल भन्यो भने यो। दे अपील टु आवर इमोसन्स नट टु आवर माइन्ड, दे क्यापिटलाइज अन आवर प्रेजुडिस एन्ड बायसेस, होइन। दे वर्क बिकज वी पिपल डु नट हेभ क्लियर थिङ्किङ, दे डु नट एनालाइज अ क्लेम, दे डोन्ट रिसर्च द फ्याक्ट, they don't examine both sides of an issue, they do not use logic to see flaws in an argument, होइन। They also work because sometimes they send a truthful, worthwhile message while advertising something bad, and they work because people do not have independent thinking. त यो पाठबाट मलाई के सोध्न मन लाग्छ, सोध त। मैले च्याप्टर 3 को 3टा कोर रिडिङ पढाएँ। अब त्यहाँ 3टा या 4वटा एडिसनल रिडिङ छ सानो सानो, जस्तै कुन कुन छ भने मैले तिमीलाई देखाउँछु ल किताबबाट। त्यहाँ भएको एडिसनल रिडिङ देखाउँछु ल। मेरो किताब पनि च्यातिएर पाना पाना भएछ कि, यहाँ छ यो। कहाँ गयो? होइन, एडिसनल रिडिङ के छ भने, तिम्रो किताब पनि अगाडि हेर्दै जाऊ। स्टुडेन्ट्स साल नट डाउनलोड या सो, यो मैले अहिले पढाइरहेको छैन, तिमीले आफै पढ्ने हो। अनि एडिसनल रिडिङ 2 मा डोन्ट टच द्याट डायल पनि मैले अहिले पढाउँदैन, तिमीले आफै पढ्ने हो। अनि कन्सेप्चुअल फ्रुट पनि आफै पढ्ने। 3टा रिडिङ छ, यो अहिले तिमीले आफै पढ्ने। एउटा पोइम पनि छ 4वटा। अहिले मैले एडिसनल रिडिङ पढाउँदिनँ, कोर रिडिङ मात्रै पढाउँछु, किनकि हामीले जाँचलाई बढी फोकस कोर रिडिङमा हुन्छ, अनि धेरै लङ आन्सर क्वेसन र सर्ट आन्सर क्वेसन पनि त्यहीँबाट आउँछ। तर एडिसनल रिडिङबाट नि आउन सक्छ। यो हामीले क्लासमा पढाउने होइन, मैले पढाउँदै गएँ कि अस्ति च्याप्टर 1 र 2 मा। अब मैले पहिला कोर रिडिङ पढाएर सकाउँछु यो कोर्स, अनि त्यसपछिको बाँकी टाइममा फेरि एडिसनल रिडिङ पढाउँछु। र एडिसनल रिडिङमा कुनै चिज बाँकी रह्यो भने तिमीले आफै पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब हामी जान्छौँ च्याप्टर 4 मा। च्याप्टर 4 मा जान्छौँ अब हामी। म सेयर गर्छु एकचोटि यो। सर हामी चाहिँ अब अर्को क्लासमा जानुपर्छ। ए ल, अब हाम्रो क्लास कहिले हुन्छ? अब सेक्सन ए को क्लास चाहिँ बीबीए आज बुधबार रहेछ, इंग्लिश क्लास भयो। अब कहिले हुन्छ हाम्रो क्लास? भोलि सर, भोलि। ल भोलि हामी भोलि च्याप्टर 4 को जेन्डर रोल पढ्छौँ। घरमा टाइम निकाल्न सक्नुभयो भने पढेर आएको राम्रो है त। ल अब म क्लास बन्द गरेँ है त मैले। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू।